problem is called snapshot array. So without any further delay, let's get into the problem. So उसमें होता क्या है कि हमारे पास एक initial array given होता है जिसमें हर एक element zero है. So as you can see, I have mentioned here the I array. I में तीन ही indexes है. Just for example, consider it. And then all of those indexes are initially zero, right? And then we basically make some changes to this. Suppose after making some changes, this becomes the first index becomes 1, and then the second index becomes 3, and the third index becomes 5, and then we basically snap. So one thing about this video is, for the sake of communication, the x snap is basically the x plus 1 click, because snap IDs are zero indexed. ठीक है, मतलब बार बार वो 0101 करते करते बहुत कंफ्यूजन हो जाता है. दैट्स वाई मैं जब भी बोलूंगा कि जीरो स्नैप है, यू कंसिडर दैट इट इज द फर्स्ट क्लिक, राइट? मतलब बेसिकली पहली बार मतलब क्लिक किया, स्नैपशॉट लिया. क्योंकि जो एल्गोरिदम है वो भी जीरो इंडेक्स है. दैट्स वाई आई आल्सो यूज जीरो indexes. Otherwise I have to, every time I use a zero index, I have to explain that this and not zero, this is one, and so forth. So which will basically come in the way of actually explaining the main concept of the problem. So for the sake of ease of communication, zero snap matlab first clip, x snap matlab x plus one clip. Okay, so with that out of the way, so ठीक है, अब ये तो हो गया कि ये हो गया, फिर हमने snap किया, whatever is going on is going on. So another important concept is, जब भी हम जैसे जैसे इनिशियली 000 था, ठीक है. सो मतलब whenever we are changing any index, for example, I suppose change this index to 1, right? If I change this index to 1, then this change should be recorded against snap ID of 0, of the 0 snap, because ये kind of ये kind of snap ID minus one, which is basically virtual snap ID for this case, because there is no snap ID before the zero snap ID. And zero snap ID, you can consider whatever our changes are being made uh, should be only significant for the zero snap. क्योंकि कोई एक इंडेक्स अगर पकड़ लो, उस इंडेक्स में जो लास्ट चेंज जो किया हुआ है, what I mean, that index might go through a sequence of edits, right? But the उस इंडेक्स का जो लास्ट एडिट है, वो मतलब वो किस स्नैप के लिए होना चाहिए. अगर ऑलरेडी एक्स माइनस वन स्नैप हो चुका है, सो दैट लास्ट चेंज ऑफ द अदर पर्टिकुलर इंडेक्स इज ओनली सिग्निफिकेंट फॉर द एक्स स्नैप, राइट? सो हम बेसिकली वही करेंगे कि कोई भी इंडेक्स अगर चेंज हुआ, तो उसको हम अगेंस्ट एक्स स्नैप हम रिकॉर्ड करेंगे जब ऑलरेडी एक्स माइनस वन स्नैप्स हो चुके हैं और एक्स स्नैप होने वाला है, राइट? सो so this is why that is, and that will become even more clear when I will explain you how the data structure is getting populated. So let's come to that, because that's the other thing, that's the only other thing that is remaining. So बेसिकली हम इनिशियली क्या करेंगे, 0 0 पॉपुलेट कर देंगे हर जगह, बिकॉज इफ इफ सपोज जीरो स्नैप में अगर कोई भी इंडेक्स में कभी चेंज नहीं हुआ, तो वी शुड रिटर्न जीरो, बिकॉज जीरो इज द इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू, राइट? और सपोज एक्स स्नैप हो रहा है, उसमें भी कभी भी बेसिकली एक्स स्नैप से पहले कभी भी उस इंडेक्स में कभी चेंज हुआ, देन वी हैव टू अगेन फॉल बैक टू द डिफॉल्ट वैल्यू. एंड दैट्स वाई मतलब हम हमेशा 0 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? दिस इज मोर रिलेवेंट टू द एक्चुअली टू जीरो स्नैप. तो uh, and not in particular x snap, but anyways, that's the reason of putting 0 0 in, कि whenever uh, whenever we query for this index on the zeroth snap, we should get a 0, because that is the default value, right? uh, ओके. सो नाउ मतलब ठीक है, तो ऐसा होगा कि सपोज फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल. सो फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है, एंड देन वी आर बेसिकली ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट्स द वैल्यू फॉर इंडेक्स एट द इंडेक्स वन एट द सेवेंथ स्नैप, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक अपर बाउंड फंक्शन लगाएंगे जो कि हमको ये वाला बेसिकली लिंक लिस्ट का नोड देगा, और इटरेटर का आईटी देगा. एंड इसका प्रीवियस जो आईटी होगा, दैट विल बी द वन, दैट वैल्यू दैट वी आर लुकिंग फॉर, दिस वैल्यू. बिकॉज ये क्या है, ये मतलब सेवेंथ स्नैप में जो लास्ट एडिट हुआ है वो वैल्यू है, डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ सेवन स्नैप इंडेक्स वन में वही वैल्यू रहेगा, राइट? सो ये
Okay, so and this upper bound is basically a binary search internally, which is why it is very optimal. So and that's why we should go for it. क्योंकि otherwise ये ऐसा position हम search करने जाएंगे linearly, it will cost order and time, but for binary search it takes order log and time, which is obviously very efficient, right? So that was the entire like concept behind the problem, right? And then let's go to the solution, and then let's, if anything is left, I will explain those things there. तो स्नैप आईडी क्या करता है, स्नैप आईडी रिटर्न करता है ऑब्वियसली, मतलब स्नैप आईडी जीरो इंडेक्स्ड है, तो इनिशियली फॉर द फर्स्ट, सिंस द स्नैप आईडी इज initialized as 0, it will return 0, and then for the second click it will return 1, and third click 2, and so forth, because it is zero index. Okay, it makes sense. And then we are trying to set an index for val. ठीक है, इंडेक्स में वैल्यू हम सेट करना चाहते हैं, देन विल टू क्लिक द करंट स्नैप आईडी। ठीक है, मतलब ये स्नैप आईडी वो देगा जो अभी तक स्नैप आईडी हुआ नहीं है, क्योंकि व्हेनेवर वी रिटर्निंग वी आर डूइंग अ प्लस प्लस, राइट? सो रिटर्न में तो ये वैल्यू आएगा, बट उसके बाद एक ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। दिस द पोस्ट इंक्रीमेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो मतलब तो फिर जो हम स्नैप आईडी आने वाला है उसके अगेंस्ट में वैल स्टोर करेंगे, बिकॉज दिस वैल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर दैट स्नैप आईडी। So this line makes sense. And then initially we obviously push back that 0 0 जो मैंने explain किया था, क्यों हम push back करेंगे, क्योंकि if 0 snap के पहले अगर कोई भी change नहीं होता तो that index should give 0, because 0 0 is the default value of all indexes in the array. ठीक है, so that's that. And then when you try to get कि भाई इस snap id पे कितना index है, तो we will do that upper bound thing, and that will give us the first value at the next snap id, but we want the last value of the current snap id, so that's why we'll do a previous it dot second, and then we'll return that. So as you can see, I have submitted this kind of solution, and this passes all cases. So I hope you are able to understand the problem. Just before leaving, I think probably this is don't think about this, right? Because this makes no sense. So you should keep it. You should, for this example, just try to think about what happens when you're doing the zero snap, and then there is no changes to this index. And then there are some edge cases which are not getting considered. For example, what if we like give a snap id which has not yet happened during this kind of this get call, right? So वो सब conditions, वो the boundary conditions यहाँ पर dealt with नहीं है, that means the input is such that कि उसको deal करने की जरूरत ही नहीं है. So then for this then we don't have to deal with, obviously कोई real time application होगा or production application होगा, we need to deal with all those scenarios. But since this lead code and the input and then there are no troublesome inputs, we can get away with not doing any sanity checks here. So hopefully I was able to properly like explain the problem, explain the methodology and the logic behind the methodology, and also the code. I'll see you in the next video. Thank you. Bye.